It is the evening of the 9th of August, and the Rainbow Mizo channel wishes our viewers a very good evening. Since there is no distinct interstate boundary between the states of Assam and Mizoram, it makes it even more complicated to resolve the boundary issue. The Assam state officials gave their assurance to the stranded drivers in Mizoram House Siltar by promising their safety, and the Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma made convincing statements on Twitter on wanting to resolve the dispute in peace. This was followed by an immense shout-out from the Northeast Live media promoting the Assam Chief Minister as the noble initiator of peace between the two states. To the rest of the world, after the claim was made that the stranded travelers would be safely escorted to leave Assam, that plan has failed. On the late afternoon of 7th August, the stranded drivers in Mizoram House were escorted to leave the Mizoram House and were heading to Mizoram. If not for the stops made along the way, the vehicles would have reached during the daylight. From our recent interview with the drivers and owners whose vehicles were damaged by bricks, we have acquired knowledge that these vehicles should have reached Mizoram by 3 p.m. Despite the fact that there was no traffic jam or complications on the road, these vehicles were delayed and made to stop for a long period of time, and the drivers did not immediately understand why they made this. It is reported that the reason for this delay was because an Assam MLA gave a speech and that it was well planned out by the Assam government to make the drivers wait out till the dark in Lailapur, where an overwhelming amount of Bangladeshi illegal immigrants reside. The vehicles were made to wait all throughout the MLA's speech. It seems that with the ongoing issue, Lailapur is the most dangerous spot in Assam. The roadblock was also initiated by a lot of residents in Lailapur. The immigrants who came from Bangladesh were allegedly promised by the chief minister that he would give them land, which concludes that it is the same reason why the Assam government is having this border dispute with Mizo. Hence, the drivers were made to wait out till it got dark, which made it more convincing that the attack was pre-planned. These vehicles had enough time to reach Mizoram during the daytime, but were made to wait out till dark. It was also reported that by the drivers, when it got dark, a mob had gathered around them and the Assam police made a sudden disappearance and were nowhere to be seen. Since they weren't protected, the mob became increasingly violent and damaged their vehicles. It is also reported from the owner's communication with the drivers that Lailapur's violence was an attempt to murder them. The mob was equipped with all sorts of improvised weapons to attack the vehicles. Although there is an ongoing issue between Assam and Mizoram, it is reported that vehicles from different states were all attacked. The vehicles damaged included those from the state of Haryana, Tripura, and Nagaland. A lot of the vehicles entered Mizoram on the 8th of August with broken windows and other damages. Rainbow Mizo channel immediately headed to Vairengte to inquire about the incident from the stranded travelers in Assam through phone calls. The drivers and the owners of these vehicles were also interviewed. We have acquired similar information from them that the incident in Lailapur was a well-planned-out attack because they were purposely delayed and were attacked after dark, and the Assam police disappeared on. They had expected the CRPF on site to defend them, but they stood idle and watched on the sidelines. The Assam media desperately sought out all sorts of measures to plead innocence and announced that the Assam police allegedly shot 40 rounds of bullets to chase the mob away, but the Mizo witnesses who were harassed by the mob has refuted that by claiming that the Assam police were nowhere in sight during this incident. And the CRPF, who were stationed on the site by the central government to ensure peace, just stood idle and became an audience to the ongoing violence. To provide evidence for this report, we have communicated with vehicles transporting goods from Tripura and Nagaland that passed through Assam on its way to Mizoram. These drivers made the same claim that the Assam police were nowhere to be seen and the CRPF stood idle on the scene. A driver from the state of Tripura claimed that even though the vehicles were from different states, they were all attacked and even all the goods carried by his colleague were destroyed in Lailapur. So the driver had to return to Siltar to recover the same goods since he had nothing to carry on his vehicle. The Assam government, in an attempt to look innocent, freed a few vehicles on the night of this incident. The few vehicles safely made its way to Mizoram, which unleashes another manipulation by the Assam government to the rest of the media. Although these vehicles that reached Mizoram were very few, the vehicles were taken on their cameras
and the Assam state media claim that the vehicles journeyed without any problems or delay. This is how they are following the rest of India, and since they freed the vehicles one by one, they made it seem like there wasn't a lot of vehicles stranded. The vehicles traveled till 2 a.m. On the same night, the Assam government made the announcement that all other stranded vehicles traveling to Mizoram can proceed. But due to the incident in Lailapur, it is reported that the drivers are unwilling to go through the same violence that the drivers passing Lailapur had. They had suffered several injuries, bricks were thrown at them, some suffered injuries on their necks and heads from the bricks, and some suffered injuries from blocking themselves from the bricks. Even the still stranded vehicles from the states reported that they didn't deem it safe to travel on the same night. The Assam government made another assurance on the 8th of August to provide the safety of these drivers and their vehicles. But the Siltar Young Mizo Association has advised them to not resume their travel yet since they also deem it unsafe. The Young Mizo Association in Siltar also prepared food for the stranded travelers in Mizoram House. Alternatively, a meeting was held in Vairengte by the all NGOs and joint VC, and a resolution was passed that the Assam government gave fake assurance and fake escorts and has no empathy towards human life by blocking the national highway for 12 consecutive days. They deprived Mizoram of essential commodities and life-saving medicines. Despite the fact that they put the lives of the drivers at stake, they deemed the Assam government unfit for governance and suggested the Indian government to hand the state of Assam to a president's rule. And on the fifth resolution, they stated that any vehicles traveling from Assam to Mizoram should no longer be escorted by Assam police and should be escorted by the central force. Knowing well the behavior of the neighboring state, it is also requested that the Siltar LO schedules any vehicle to reach Mizoram during the day. And on the second resolution, it is stated that the central police force stationed for peacekeeping during the rivalry between Assam and Mizoram is unsafe for Mizoram. Hence, it is requested that the Indian government replace them with BSF. There were 8 resolutions made from the emergency meeting, and from the highlighted resolutions alone, we can conclude that the escort party given by the Assam government were clearly unreliable, and the safety assurance and claims was all fake. From the interviews we conducted with different state vehicle owners and drivers yesterday, they said that they were very surprised that the escort party ran away and the CRPF just watched on the side. They also claimed that the still stranded Mizoram drivers would not be safe with the Assam police escort. Even with the ongoing issue, we can safely say that the illegal Bangladeshi immigrants contribute to more than half of the immoral acts against Mizoram, like blocking the national highway. These illegal immigrants are heavily populated in Lailapur. The still stranded Mizoram drivers also claim that the Assam government made the vehicles wait out till dark in the most dangerous spot and attempted to lead them to their death while their vehicles were vandalized. This act by the Assam government is highly immoral. The ineffectiveness of the CRPF camp, which failed to play a strong neutral role on the 26th of July by casually letting the Assam police inside Mizoram borders and fire their guns, have proven them to be inadequate for the job. Also, we request the escort and protection duty of the Mizo people in Assam not to be vested upon the Assam police, as the Assam regiment located in Shillong, Meghalaya, or the non-CRPF infantry from the military base in Dispur, Assam, seem more suited to carry out this task. Hereby, we request our respected LO in Siltar and our state government representatives to make demands to the central government, not to put the Assam police on the CRPF in charge of any further task. That is all the reports we have gathered for now. Until then, stay safe. चलो इधर से हम लोग निकला कैसे? इसके साथ में आया है। तो आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए। तो दिल्ली से आया सिलचर मिजोरम कब घुसा है? हम दिल्ली से चले थे 21 तारीख को। हाँ। और सिलचर में पहुंच गए हम 27 तारीख को। 27 तारीख को इधर आए तो हमको पता नहीं था कि एक दिन पहले इधर लफड़ा हुआ है। तो पब्लिक हमको घेर लिया। पब्लिक घेरा तो हमको बोला कि जो आगे गाड़ी लेके नहीं जाना है, जो बॉर्डर पे लफड़ा हुआ है। हमने बोला क्या लफड़ा हुआ है? तो बोला कि हमारे असम पुलिस को मिजोरम पुलिस मार दिया। मुझे कुछ पता नहीं था। और पब्लिक जैसे बोला रुक जा, मैं रुक गया अपना। सारी रात इधर रुक गया 27 तारीख को। 28 तारीख को दिन में फिर सुबह गाड़ी लेके गया मैं। तो जुलाई से पहले पेट्रोल पंप है, वहाँ पे जाकर के फिर पब्लिक घेर लिया, गाड़ी नहीं जा सकता। वहाँ पे रुक गया 28 तारीख को।
29 तारीख को दिन में यहाँ से हम 2-4 ट्रक को देके जाते थे, तो हमको लगा कि शायद खुल गया है वो। मैं भी गया, जब लैलापुर पहुंचा वहाँ पे चेक पोस्ट के पास, वहाँ के पब्लिक लोग हमको घेर लिया गाड़ी 29 तारीख को। फिर हम अपना माल का पेपर था वो चेक पोस्ट के अंदर पुलिस को दिखाने के लिए गए, तो पुलिस हमको बोला कि जो अभी रोड बंद है गाड़ी लेके वापस तुम कहीं दूर चले जाओ, इधर सुरक्षित नहीं है। फिर हम गाड़ी लेके वापस आ ही रहे थे कि एनडीटीवी न्यूज वाला हमको मिल गया। तो न्यूज वाले हमको पूछा कि भाई साहब कहाँ से आए हो, तुम्हें सारा कहानी बताया, दिल्ली से आया, ये बात हुआ, इधर गाड़ी में ऑक्सीजन प्लांट का मशीन है, ऑक्सीजन बनाने वाली, वो अपना न्यूज में डाल दिया। न्यूज में डालने से सारा खबर हो गया, पूरा पुलिस वाले को पता लग गया। पुलिस वाले हमको ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच गया, पेट्रोल पंप पे खड़ा थे। अच्छा। हमको बोला कि तुम मेरे साथ चलो, तुमको हम मिजोरम हाउस में लेके चलेंगे। तो हम सोचे, हमको पता नहीं था मिजोरम हाउस क्या होता है, कहाँ है। तो बोला कि सिलचर में लेके चलो तुम मेरे साथ में, मौजूद था। फिर उसके साथ हम इधर आ गए 29 तारीख को, तब से इधर रुके हुए थे। तो कल में 7 तारीख को तो रुका हुआ इधर कैसे निकला है, किस लिए निकला, कौन सा खबर मिल के आप निकला? हमको मतलब इधर में थे तो पुलिस वाले ने हमको फोन किया मेरे नंबर पे, जो आप कहाँ है, तो हम मिजोरम हाउस में है। तो हमको बोला कि आप लोग तैयार हो जाइए, आप लोग को आज जाना है, हम लोग पार कराएंगे। तो इधर आके हम खबर की मिजोरम हाउस के ऑफिस में, सर हमको फोन आया उधर से, तो बोला कि फोन आया तो किसका कैसा नंबर था बताओ, नंबर दिए, बात किया, तो बोला ठीक है। तो तब तक इधर ऑफिस में भी अपना इन्फॉर्मेशन उधर से आ गया। अच्छा। सब कुछ होने के बाद में सब आदमी यहाँ से जो है पुलिस के साथ में यहाँ से निकले, गेट से बाहर हुए। गेट से बाहर हो गए, बस थोड़ा आगे गए ना तो शिवचार पार करके सोनाईगाछी, सोनाबाड़ी घाट, हाँ उधर में जो है सो करीब करीब गाड़ी 1 घंटा उधर सब था मेरे साथ। उसके बाद में हम पता किए तो गाड़ी रुक गया, तो बोला बॉर्डर पे पब्लिक इकट्ठा हो गया ज्यादा, तो उधर मामला शांत होगा, इधर से गाड़ी जाएगा। तो उधर में सोनाबाड़ी घाट में आप किस लिए रुका है? वो हमने पूछा पुलिस से, तो बताया कि बॉर्डर पे पब्लिक इकट्ठा हो गया है। अच्छा। इसलिए गाड़ी अभी नहीं जाएगा, कुछ देर के बाद जाएगा, इसलिए गाड़ी उधर कुछ देर के बाद जाएगा बोल के। और पीछे में कौन कौन आ रहा था? पीछे में पता लगा मिनिस्टर का गाड़ी, मिनिस्टर आया था। अच्छा। पता नहीं कौन मिनिस्टर थे, तो वो मिनिस्टर आया, तो जितना भी पुलिस था हम लोग के साथ में सब हम लोग को छोड़ दिया और मिनिस्टर के पीछे भाग गया। और मिनिस्टर सरकार के लिए आगे गया है, आगे गया जो पब्लिक को ठंडा करने के लिए गया ना, काय के लिए गया मिनिस्टर? बॉर्डर वही पब्लिक को ठंडा करने के लिए। तो पब्लिक को ठंडा करने गया, तो आप पीछा क्यों, उसका पीछा क्यों किया? हमने उसका पीछा नहीं किया, पुलिस हमको साथ ले गया वहाँ से। अच्छा। पुलिस हमको बोला कि आप चलो, तो सब गाड़ी को साथ ले गया, फिर हम उसे वहाँ से निकले। तो आप उसी में आपने जो पुलिस को पीछा किया, हम लोग उधर में रुका, आप कोई डाउट तो नहीं उधर में पब्लिक इकट्ठा रहे और जानी से मार खाएगा बोल के वापस क्यों नहीं आया? हमको डाउट हुआ, लेकिन साथ में पुलिस वाले था, पुलिस के अंदर में हम थे ना। अच्छा। पुलिस का जो पुलिस कह रहा है चलो आगे, तो पीछे तो नहीं मुड़ सकते। अच्छा। पुलिस के अंदर में पुलिस के बात में चलना पड़ेगा। अच्छा। उसी के बाद में फिर आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते और क्या होते जा रहा है? फिर वो भिलाई पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे जाके 15-20 मिनट गाड़ी रोका, और फिर वहाँ से 15-20 मिनट के बाद गाड़ी वहाँ से निकला। वहाँ से निकला तो एक ही बार में गाड़ी जाके लैलापुर चेक पोस्ट पे गाड़ी रुका। गाड़ी जैसे ही रुका, हम लोग को पता नहीं चला, गाड़ी रुका और अचानक से हमला हो गया। अच्छा। ताबड़तोड़ इतना बड़ा पत्थर पूरा मार रहा है, मेरा आगे का शीशा टूट गया। तो मिनिस्टर ठंडा करने के लिए गया, तो मिनिस्टर ने जनता को ठंडा नहीं किया? ये तो पता नहीं क्या हो रहा था उधर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो पूरा दिमाग मतलब हलूल हो गया, क्या हो रहा है इधर। फिर इतना बड़ा पत्थर मारा, शीशा मतलब गेट का टूट गया, तो गेट का शीशा टूट गया, तो मेरा भरोसा उठ गया कि अब जो मारेगा पत्थर, अच्छा, वो तो शीशा पे लगेगा नहीं, सीधा सर पे आके लगेगा। तो मैं गाड़ी को चाबी ले लिया, गाड़ी का कागज ले लिया, मोबाइल ले लिया, गाड़ी से नीचे उतर गया। 4-5 पुलिस वाले खड़ा था, मैंने उसको बोला कि सर मुझे बचाओ, नहीं तो सर में लग जाएगा। अच्छा। वो बोल रहा है जाके गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। वो और हमको छोड़ दिया, उधर भाग गया, किधर गया पता नहीं। और दूसरा गाड़ी उनको कहाँ में था? आपका साथ में जो गया एस्कॉर्ट में, वो कहाँ में था उस समय? कहाँ गया पता नहीं। मतलब अपने आप बचाने के लिए सब इधर उधर हो गया, सब इधर उधर हो गया, कोई कौन कहाँ गया कोई नजर नहीं आ रहा, भाग गया ना, सब भाग गया। वहाँ पे पब्लिक लगभग कितना आदमी होगा? लगभग
पब्लिक का तो हमको लगता है पब्लिक पूरा ढेर 500 से ऊपर पब्लिक था, 1000। अच्छा 500 से ऊपर जी। अच्छा हाँ। फिर इधर वापस आ करके आप अभी ठंडा हो गया बोल के सुना है, और रास्ता अभी सही ढंग से छोड़ रहा है, फिर आप मिजोरम तरफ जाएगा ना नहीं जाएगा? हम मिजोरम तरफ पुलिस के बात पे नहीं जाएंगे। अच्छा पुलिस के साथ हम नहीं जाएंगे। अच्छा हम लोग जाएंगे तो हम लोग को पर्सनल जितना गाड़ी जाएगा, 4-5 जो भी गाड़ी जाएगा, हाँ जी। इसके लिए तो सीआरपीएफ का हमारे साथ होना चाहिए, तब हम यहाँ से जाएंगे, ऐसे नहीं जा सकते। पुलिस के बात पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना पुलिस के साथ गया फिर ये काम हो गया, पुलिस के बात पे नहीं जाएंगे। ठीक है, और कोई कुछ कहना है? अब उधर में पब्लिक लोग मार रहा था, कैसे करके, मतलब पब्लिक को हाथ पैर जोड़े, हमारा क्या गलती है, हमको क्यों मार रहे हो? फिर वो लोग जो है सो उसमें से 1-2 ऐसे था जिसका आत्मा पिघल गया, वो जो है सो फिर हमको थोड़ा हेल्प भी किया, उसमें से 1-2 गाड़ी घुमाया, गाड़ी घुमा के और सीधा भागते लगा के। और कुछ कहना है? नहीं, हो गया ना? ठीक, थैंक यू। धन्यवाद आपके ऊपर। हाँ।